गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्नियर मूवमेंट। तो डीएम के गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक मेमोरियल बनाने की बात की है विल्लुपुरम में, जहां पर 1987 में क्लैश हुआ था, पुलिस फायरिंग हुई थी और 21 लोग जो हैं वहां पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मर गए थे। तो ये इशू है क्या, ये देखते हैं। तो वर्नियार्स वहाँ पर एक बैकवर्ड कम्युनिटी है और वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे 1980s में। 20% रिजर्वेशन वो स्टेट में मांग रहे थे, 2% रिजर्वेशन वो सेंट्रल सर्विसेज में मांग रहे थे। तो उस टाइम पर 1987 में एक एजिटेशन हुआ। तब वहाँ पर क्या हुआ कि आपस में कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो भिड़ गई और जो है पुलिस फायरिंग भी करनी पड़ी, और उसमें क्या है 21 प्रोटेस्टर्स जो है उनकी जान चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है ओबीसी कोटा को स्प्लिट किया 1989 में, और बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में जो है उसको डिवाइड कर दिया ओबीसी कोटा को। वर्नियार्स को जो है उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के अंदर डालकर 20% रिजर्वेशन जो है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए अनाउंस करी। और अब 30 साल बाद जो है AIA-DM के गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, जो भी इससे पहले DM के गवर्नमेंट से पहले थी, और उन्होंने कहा था कि उस 20% रिजर्वेशन में जो 10.5% रिजर्वेशन है वो वर्नियार्स को मिलेगी। जो 20% का MBC कोटा जो अनाउंस किया गया था पिछले बार जो 1989 में, उसमें से जो 10.5% का जो रिजर्वेशन है वो वर्नियार कम्युनिटी को मिलेगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। वर्नियर मूवमेंट। सो रिसेंटली द DMK गवर्नमेंट इन तमिलनाडु has announced that they will be constructing a memorial in Villupuram to commemorate the uh, killing of people or protesters who were killed in police firing and clashes which happened during the 1987 period. So what happened during that period was that generally these Vaniyar community, the people from this Vaniyar community, they are backward communities, and they were demanding 20% reservation in state government and 2% reservation in central services. So during that period in 1987, they started a protest movement, and this protest movement turned violent. They clashed with some other scheduled caste community members, and it led to police firing, and that's why 21 protesters were killed in that clash. After that, the government of the then government of Tamil Nadu in 1989, they announced that they will be splitting the OBC quota into backward castes and most backward castes, and they will be including these Vaniyars in the uh, MBCs or the most backward castes along with other 107 other communities. Okay, and they announced that 20% reservation will be given to these most backward castes. So now, after 3 decades, 10.5% reservation has been announced for 1 years within that 20% MBC quota. Okay, so now let us see the next topic, which is CDOT. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है उनका 38th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन अभी जो है वो मनाया गया है। CDOT जो है वो बहुत न्यूज़ में रहता है, आपको पता होगा कि ये एक प्रीमियर एजेंसी है जो रिसर्च करती है हमारे टेलीकॉम के फील्ड में। हमारी कंट्री में टेलीकॉम रिसर्च में इसका बहुत बड़ा रोल है। 1984 में इसको बनाया गया था। एक ऑटोनॉमस टेलीकॉम R&D सेंटर है इनका, और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। ठीक है। अब वैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है CDOT, लेकिन ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडिविजुअल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। अब कहा जाता है कि जो इंडिया में जितना भी टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया है उसके पीछे जो रिसर्च थी वो CDOT ने ही करके दी है, और CDOT का जो है वो बहुत बड़ा रोल है इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाने में। ठीक है। इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत नेट, इन सब में भी जो है CDOT का रोल बहुत अहम है। ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. CDOT. So Center for Development of Telematics. It's a premier R&D center of the Department of Telecommunications. They have now observed their 38th foundation day. It was established in August 1984 as an autonomous telecom R&D center. It is also a registered society. So it is not a statutory or autonomous body like we study generally. It is a registered society. Okay, so you will have to remember that it is a registered society, and it is registered under the Societies Registration Act.
Okay, and apart from the fact that they are working under the Department of Telecommunications, they are also registered as public funded research institutions under the Department of Scientific and Industrial Research. Okay, so the CDOT is hailed as the progenitor of indigenous telecom revolution. So what does this mean? So generally we say that the telecom revolution that has arrived in India, um, this CDOT is partly responsible for that. They have made some remarkable innovations. They have made some remarkable research so as to push telecom revolution in India. So in the nearly last 3 decades, if the country has seen the journey from 0 to 4G and even now 5G, CDOT is to be thanked for that, because they have contributed much to the Indian telecom networks digitization. Okay, so they are also helping the government in several of their schemes like Digital India, Make in India, BharatNet, etc. So the role of CDOT cannot be discounted in furthering the development of telecom industry in India. Okay, so now the next topic is Nipah virus. आपको पता है एक नीपा वायरस का केस आया है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, केरला के, और वो एक 12 साल का बच्चा था, उसकी जो है वो डेथ हो गई है इस नीपा वायरस की वजह से। तो अब ये नीपा वायरस होता क्या है? नीपा वायरस सबसे पहले मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 1999 में पहले जो है वो पाया गया, और डोमेस्टिक पिग्स में सबसे पहले इनको देखा गया। ठीक है, अब याद रखना, आप अगर ऑप्शन में दिया कि ह्यूमंस में दिखा गया, सबसे पहले ह्यूमंस में मिला, तो वो गलत होगा। जैसे बैट में हमको कोरोना मिला था, वैसे ही डोमेस्टिक पिग्स में नीपा वायरस सबसे पहले पाया गया। और इवन जो है अलग अलग जो है डॉग्स, आई एम सॉरी, एनिमल्स की स्पीशीज जैसे डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेज, शीप, इन सब में भी जो है नीपा वायरस के स्ट्रेन देखने को मिले थे। अब जो है ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करता है, ऑफ कोर्स, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है। ये इसका जो आरएनए है वो एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, पैरामाइक्सोविरिडे। ठीक है, जो कि हैंड्रा वायरस से क्लोजली रिलेटेड है, उसी के साथ का ही ये ऑर्गेनिज्म है, और उसकी वजह से ही ये नीपा वायरस होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होगा, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, जो जनरली आपको देखने को मिलती है कोई भी वायरल डिसीज में। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसकी 50% तक जो है वो फेटेलिटी रेट है। मतलब अगर अभी जब मलेशिया में कुछ टाइम पहले हुआ था, तो जितने लोगों को ये नीपा वायरस हुआ था उसमें से 50% लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, नीपा वायरस का, जैसे आपको पता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जनरली ऐसे वायरसेस का। तो इसको जो है हम सिर्फ इंटेंसिव सपोर्टिव केयर ही कर सकते हैं, और कुछ इसमें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Nipah virus. A case of Nipah virus has been observed in Kozhikode district of Kerala. So he was a 12-year-old boy, and he suffered and he succumbed to this virus. This virus is an infectious disease, and it broke out first in Malaysia and later in Singapore in the years of 1998 and 1999. First it appeared in domestic pigs, like you know that coronavirus emerged from coronavirus appeared in bats. So similarly Nipah virus was first observed in domestic pigs, and it was found that several domestic animals like dogs, cats, etc., they were also found to be infective of it. And this Nipah virus belongs to an RNA or of the Paramyxoviridae family of viruses, which are closely related to Hendra virus. Okay, and the symptoms of the viral are similar to the ones that we have noticed in other forms of viral diseases like fever, headache, mental confusion, coma, even potential death. Okay, so the fatality rate of Nipah virus is almost 50%. So this is a matter of concern for us. Like when there was an outbreak in Malaysia, when the first outbreak in Malaysia was happening, 50% people died due to this virus. There is no specific treatment for this virus, and the doctors or the hospitals have to rely on only intensive supportive care.
सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है वो 28th एडिशन, जो सिम्बेक्स 2021 जो है वो 28th एडिशन सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का है, जिसमें जो है साउथ चाइना सी में, इस बार साउथ चाइना सी में ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है और इसमें जो है सिंगापुर और इंडिया की नेवी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से शिप गए हैं, कौन कौन से डिस्ट्रॉयर गए हैं, ये आपको मतलब नहीं होना चाहिए, इससे आपको याद में रखने की ज़रूरत नहीं है। एंटी सबमरीन, एंटी एयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स ये सब की जा रही हैं इसमें। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि ये एनुअली तो होती हैं, लेकिन सिर्फ एक यही सिम्बेक्स ही ऐसी नेवी की एक्सरसाइज है जो आज तक लगातार चलती आ रही है 1994 से। अब आपको पता होगा ना, मालाबार एक्सरसाइज भी होती है जिसमें हम यूएस के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं और रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया है, लेकिन उसमें भी ब्रेक्स आए हैं। खासकर जब इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे वाजपेयी जी के टाइम पर, तब कुछ ब्रेक आए थे उस मालाबार एक्सरसाइज में, कुछ वजहों से जो है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन 1994 से ये सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है ये लगातार चलती आ रही है, तभी जो है वो इस साल का जो है वो 28th एडिशन बन रहा है। और ये अकेली ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी इंडिया की नेवी किसी भी फॉरेन नेवी के साथ इतनी अनइंटरप्टेड और लॉन्गेस्ट रनिंग एक्सरसाइज करती आई है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इससे पता लगता है सिंगापुर और इंडिया के जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो कोई अप्स एंड डाउन्स उस पर नहीं आते हैं, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप है। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Simbex. So recently 28th edition of Singapore India maritime bilateral exercise, which is also known as Simbex, has been conducted, and this time it is being conducted in the southern area of South China Sea. Okay, so it's kind of a provocation for China that we are also expanding our footprint into the South China Sea with friendly neighbors. That's why we have chosen this area, and this exercise is being conducted via during this pandemic period, but several precautionary steps have been taken, and these exercises will be including anti-submarine, anti-air, and anti-surface warfare drills. The most important thing about this Simbex exercise is that it is the longest uninterrupted bilateral maritime exercise that Indian Navy has been conducting with any other foreign navy. Okay, so you may be thinking then that Malabar exercise started in 1992, but of course there were some years when Malabar exercise was skipped because of several reasons. But since 1994, when this Simbex exercise started, there has not been a miss, and that's why this time it's the 28th edition of this exercise that is being conducted in South China Sea. So now let us see the next topic, which is Karbi Anglong Agreement. तो Karbi Anglong कहाँ पर है आपको पता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट है असम में। तो वहाँ पर कुछ जो है वायलेंस चल रहा था, मिलिटेंसी चल रही थी, तो अब गवर्नमेंट ने एक पीस डील साइन कर ली है, करबी आंगलोंग एग्रीमेंट। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने जो है, असम के चीफ मिनिस्टर ने और करबी आंगलोंग में जो ये मिलिटेंसी थी उनके साथ जो है पीस डील साइन कर ली है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है करबी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, उनको और ज़्यादा लेजिस्लेटिव, फिर जो है लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ये पावर्स जो दे दी गई हैं, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चर को भी बचा सके। एक्चुअली था क्या, ये बैकग्राउंड देखो यहाँ पर, 1986 से उनकी ये डिमांड थी कि आपने करबी आंगलोंग रीजन जो है उसको आप एक स्टेट बनाओ, सेपरेट स्टेट, हम असम का पार्ट नहीं रहना चाहते। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर करबी आंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल्स जो है उनमें 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स बना दिए, जिनके पास कुछ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स दे दी। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है ये वायलेंस की जो प्रक्रिया नहीं रुकी, क्योंकि उनको लगा कि जितनी डिमांड उन्होंने रखी थी उतनी ज़्यादा पावर्स जो है वो इस काउंसिल्स को नहीं दी गई। तो अब रिसेंटली जो है अब ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इसमें उनको आइडेंटिटी, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की भी पावर्स जो है वो इस काउंसिल को दी जा रही हैं। और करबी आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं उन्होंने एग्री किया है कि अगर आप हमारे को ये देने को तैयार हो ये पावर्स, तो हम भी वायलेंस का रास्ता छोड़ेंगे और हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है इवन जो
आर्म्ड ग्रुप्स थे उन्होंने सरेंडर भी किया है, तो गवर्नमेंट ने उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी प्रोग्राम बनाया है। फिर कर्बी वेलफेयर काउंसिल बनाने की भी इसमें बात की जा रही है, जो कि कर्बी पीपल जो कि इस केएसी एरिया, जो कर्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल एरिया से बाहर रहते हैं, उनके भी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम कर सकेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो असम का कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें भी जो है रिसोर्सेज एक्स्ट्रा डाले जाएंगे ताकि जो है केएसी को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या किया गया है कि एग्रीमेंट में वो ऑफ कोर्स मेंशन होगा, वो हमें तो नहीं बताया गया है, लेकिन ज़्यादा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो है वो केएसी को दी गई हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, कर्बी आंगलोंग एग्रीमेंट। सो द यूनियन होम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, and some armed groups belonging to this Karbi Anglong district of Assam, they have signed a tripartite agreement, and this Karbi Anglong district region was disturbed because they were seeking more powers to the Karbi Anglong Autonomous Council. So what happened was that during the period of 1980s, since especially since 1986, the people of this Karbi Anglong region, they have been demanding a separate state from Assam. They didn't want to be a part of Assam. But the then government at the center as well as the state of the Assam, they said that they will be forming Karbi Anglong and North Kachar Hills Council. So two separate autonomous councils were established. They were given some kind of legislative, executive and administrative powers, and even some financial powers, so that they can run their administration according to their local needs. But even after that, the violence was not stopped because of the people feeling that not enough power was delegated to this KAC. So now, after this agreement, more powers will be delegated to them so that they can make laws, they can execute such laws, and they can administer their districts or their region in terms of protection of their identity, language, and culture. So a Kirby Welfare Council has also been established so that the people who are living outside that area but they are Kirby, in fact, they will also be supported. The Consolidated Fund of Assam State will also be supported so that it can further support the Kirby Anglong Autonomous Council. Okay, with resources, of course. So basically, the government is trying to transfer more power to more legislative, executive, administrative, and financial powers to these two councils now. Okay, so now let us see the next topic, which is Monarch scheme. तो 8th जो नेशनल लेवल एग्जीबिशन और एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन जो है, जिसमें 581 स्टूडेंट्स ने अपने जो है अलग अलग मॉडल दिखाए हैं मानक स्कीम के लिए, तो वो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मानक स्कीम जो है वो क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो 10 से 15 साल के बीच के, जो 6th क्लास से 10th क्लास के बीच के आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने न्यू आइडियाज़, अपने जो है इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी जो है वो अपने स्कूल में प्रिंसिपल या हेड मास्टर को जाकर अपने आइडियाज़ शेयर करें, और वो आगे नॉमिनेट करते हैं कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, इस बच्चे ने या इस बच्चे ने जो भी है वो ऐसे आइडिया दिए हैं। तो ऐसे टोटल 581 स्टूडेंट्स जो हैं, उनके आइडियाज़ जो है अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से जो है वो देखने को मिले हैं, और इस इनिशिएटिव के अंदर उनको जो है वो रिवॉर्ड किया जाएगा कि हाँ, आपके जो बच्चों ने जो आइडिया दिए हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं, टेक्नोलॉजिकली भी इनोवेटिव हो सकते हैं, सोशलॉजिकली भी हो सकते हैं, किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकते हैं, उनको जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इससे होता क्या है इस स्कीम में कि एक कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग आती है स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर। तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी की जो नीड्स हैं उसके लिए हमको न्यू आइडियाज़ मिल जाते हैं बच्चों से, और जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने में हमको एक तरह से हेल्प होता है। जब स्टूडेंट्स क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे उस टेंडर एज पर, एक तो हमको उसकी वजह से जो है वो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसको प्रोग्राम को कुछ टाइम पहले जो है, आई थिंक लास्ट ईयर ही किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ भी अलाइन कर दिया गया, ताकि जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है
उसके अंदर भी जो है इसको थोड़ा सा जो है वो कोरिलेट करके जो है वो इस मिशन को चलाया जाए। फिर होगा क्या कि बच्चों के जो सजेशंस होंगे, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ होंगे, वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। इवन कुछ स्टार्टअप्स के साथ वो आइडियाज़ शेयर किए जा सकेंगे। तो एक तरह से ओवरऑल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें फॉलो की जा रही है। So now let us see this topic in English. Monarch scheme. So 8th national level exhibition and project competition for the Inspire Awards, that is the Monarch scheme, has been showcased, and 581 students representing various parts of the country have participated in this. And this Monarch scheme is basically a scheme under which the children belonging to the age group of generally 10 to 15 years who are studying in the school, mostly in classes 6 to 10, they are motivated so that they can share their critical ideas, their creative ideas, their innovative thinking among school children. And they can share their how they will share their ideas. So they will share their ideas with the principal of their school or headmaster of their school, which in turn will share such ideas with the government. Okay, so what will happen with this? Students from various parts of the country will be identified and they will be rewarded under this. They will be given this Inspire Award under this scheme, Monarch scheme, and these ideas will be utilized to transform the societal needs, because once the critical thinking, the creative thinking is inculcated in our students, we can expect that the society will start transforming itself. The participation of students in such areas is also warranted. It will foster a culture of creativity and innovative thinking amongst our school students as well as the society as a whole. Okay, so realizing the importance of this Monarch scheme, the government also decided last year that this scheme must be revamped, and this must be implemented or executed by the Department of Science and Technology and National Innovation Foundation, so that it can be aligned with the Startup India initiative. So just imagine that the ideas or creative ideas that our students will be sharing with the government or the Department of Science and Technology, if they are well enough, they can also be utilized for our Startup India initiative. So it will be creating an interdisciplinary approach where school students would help the startups. Okay, new ideas will start helping our Startup India initiative also. Okay, so द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. तो अभी 24th मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो है वो कंडक्ट की गई है. इसमें बहुत से तरह के जो है वो इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिले के, कि रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए आपस में, आरबीआई, एसएबी, ये सब कैसे कोऑर्डिनेट करें, फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट कैसे की जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए. बेसिकली मैक्रो जो कंसर्न्स हैं इकोनॉमी के, उनको एड्रेस किया गया है. तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होता क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है ये, मतलब किसी एक्ट से नहीं बनाया गया इसको, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया यूनियन गवर्नमेंट ने 2010 में और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल को बना दिया. अब इसमें चेयरमैन जो होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है. तो जैसे इस टाइम पर निर्मला सीतारमन जी इसकी चेयरपर्सन है. फिर इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं खासकर, जैसे आरबीआई, सेबी, पीएफआरडे. पीएफआरडे क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. फिर आईआरडीए, आपके इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. ये सब इसका पार्ट होते हैं. मतलब पूरा आपका जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो, वो सारा इसमें पार्टिसिपेट करता है अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसे जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट जो है वो कंट्री में इंश्योर की जा सकती है. अभी रिसेंटली 2018 में गवर्नमेंट ने इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी इंक्लूड किया. फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको भी इंक्लूड किया. क्यों किया इनको इंक्लूड? क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है कंट्री में. फिर चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई, जो आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है, उनको भी इंक्लूड किया, क्योंकि एनपीए का इशू चल रहा था. तो आपका जो है इनको इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी इस एफएसडीसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है 2018 से.
ठीक है, फंक्शंस तो वही हैं इसके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को देखना, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की कैसे मैनेज की जा सकती है, उसको देखने का इसका काम है। अब किसके कहने पर ये बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था, किसके कहने पर एफएसडीसी को बनाया गया था? तो रघुराम राजन कमेटी उस टाइम पर 2008 में बनाई गई थी और उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उसमें कहा था कि एक एफएसडीसी होना चाहिए। तो उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में इस एफएसडीसी को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बनाया था। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Financial Stability and Development Council. So the 24th meeting of Financial Stability and Development Council was held recently. The meeting was called because the FSDC ought to have discussed the financial stability situation of the country, how several regulators can coordinate with each other, how financial literacy can be boosted in the country, financial inclusion, and several other macroeconomic situation and macroeconomic supervision of the economy, how it can be ensured. So all of this was discussed in this 24th meeting of FSDC. So FSDC is a non-statutory apex council. There was no parliamentary approval before this FSDC was created. There was no parliamentary act or legislation was enacted to create this FSDC. It was created by just an executive order, or the union cabinet decided, and they just established this FSDC under the chairpersonship of finance minister. So currently this FSDC is of course chaired by the finance minister, and several several authorities belonging to the regulatory authorities of the country are members of this council. So the heads of RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, finance secretary, etc., all these who are actually supervising the financial ecosystem of the country, they are all participating in this council and under the chairpersonship of the finance minister. So in May 2018, the government decided that several other members will be included in this FSDC, like the Minister of State, who is responsible for the Department of Economic Affairs. Secretary of Department of Electronic and Information and Technology was also included in this, because the digital payment ecosystem was burgeoning in the country. Chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Code of India was also included in this because of the situation of rising NPAs, and even the Revenue Secretary got a place in the FSDC. So FSDC aims to ensure that the financial stability and development of the country can be strengthened, monitored, and institutionalized. Basically, this FSDC aims to supervise the macroeconomic situation of the country, and it sees how the inter-regulatory coordination can be ensured. So in 2008, Raghuram Rajan Committee was formed to suggest measures as to how financial sector reforms can be undertaken and what kind of reforms are needed to ensure a smooth operation of regulatory regime in the financial system of the country. Under this committee, it was suggested that a financial sector a Financial Stability and Development Council must be established, and based upon this committee's recommendations, this FSDC was established by the government in 2010. Just 2 years after the recommendation, this FSDC was established by the government. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.